The process involves a loss of simple molecules like water. Process involves loss of simple molecule like water, ammonia, alcohol, etc. Water, ammonia, alcohol, etc. तो बेटा condensation polymerization में we have two bifunctional groups. Bifunctional groups are, for example, one side is acid, another side is NH2, amine. This is bifunctional monomer, right? तो repetitive condensation is अगर हम एक और NH2 and again there is a chain of acid part, तो हम कहेंगे यहाँ से एक water निकल जाएगा and these two will be joined together. तो जब ये दोनों monomers आपस में join होंगे with the removal of a small molecule like water, तो we will say condensation polymerization takes place. Minus water and condensation is occurring. Now this process is condensation and polymer formed by this process is called condensation polymer. In this type of polymerization, write down, in this polymerization, each step produces a distinct functionalized species which is independent of each other. A distinct functionalized species which is independent of each other. Therefore, it is also named as step growth polymerization. Therefore, it is also named as step growth polymerization. Condensation polymers can be studied under three subheadings. हम इसको 3 headings में पढ़ सकते थे. First is polyesters. Second we have is polyamides. And third category is resins. So we have 3 categories of condensation polymers. One is polyesters. Second we have is polyamides. Third is resins. Polyesters, 2 examples are there. One is terylene and second is Dacron. Dacron is also named as glyptal. Dacron or glyptal. Polyamide is having nylons. The nylon 6,6, nylon 6,10, nylon 6 only, nylon 2,6. All these are polyamides. Resins we are having bakelite. We are having melamine and urea formaldehyde resin. So these are the 3 categories in which we can study condensation polymers. First is polyesters. पहला जो स्टडी कर रहे हैं हम
वो है पॉलिएस्टर्स। When we say polyesters, नाम से समझ आ रहा है N times ester linkage, polyester. In these polymers we are having N times repeating ester linkage, बहुत सारे ester linkage बनेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कह रहे हैं ester linkage, तो for ester formation, for ester linkage, acid and alcohol are required. तो एस्टर तभी बनेगा जब एक एसिड ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप होगा। When there is acid and alcohol present, only then ester can be there. For example, first is टेरिलीन। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है टेरिलीन। टेरिलीन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोमर्स टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड था पैरा पोजीशन पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज टेरिथैलिक एसिड। प्लस ethylene glycol. Ethylene glycol is CH2 with 2 OH. Terephthalic acid plus ethylene glycol. This is ethylene glycol. Ester formation, acid plus alcohol, water is removed. अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमने कहा था एसिड का OH और अल्कोहल का H, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, माइनस वाटर। दिस विल बी बेंजीन COO CH2। अब बेटा ये जो OH है इसका H फिर निकल जाएगा, राइट। और इस साइड पे COOH में से OH चला जाएगा और अब ये N टाइम्स रिपीट होता रहेगा। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे जो एसिड इधर था पैरा पोजीशन पे, इसका भी एक OH कम कर दिया। इधर जो हमारे पास अल्कोहल था उसका मैंने H कम कर दिया। अब इसको N टाइम्स पॉलीमराइज करेंगे तो ये बन गया आपका टेरिलीन। तो दिस इज टेरिलीन फॉर्मेशन। हमने टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल को कंबाइन किया। These two are combining together to form teriline. टेरिलीन का नाम समझ आ रहा है, टेरिथैलिक एसिड से आया था और आपने इसको सुना भी है, यूज भी किया है। इट इज टेरिकॉट। टेरिकॉट इज नथिंग एल्स टेरिलीन प्लस कॉटन। टेरिलीन प्लस कॉटन इज टेरिलीन। So this is first polymer, polyester. Put it down. Yes, ma'am. अब आपके पास ये जो पॉलीमर्स हम बना रहे हैं टेरिलीन, these polymers are having fibrous nature. इसके फाइबर्स बनते हैं, फाइबर्स ऑफ टेरिलीन। When we say their fibers are there, तो fibers can be used to weave clothes, tents, some clothing material can be prepared by using fibers. Fibers जैसे कॉटन के फाइबर्स होते हैं, वैसे ही इसके फाइबर्स होते हैं। तो इन फाइबर्स से हम कोई भी चीज निट कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं। तो वी कैन से दिस इज फर्स्ट पॉलीमर टेरिलीन, फाइबर्स है, फाइबर्स बनते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर इज ग्लिप्टल। सेकेंड एग्जाम्पल इज ग्लिप्टल
or we can say Dacron. It is also named as alkyd resin. हालांकि ये रेजिन है नहीं, लेकिन इसको क्योंकि इसकी अपीयरेंस, इसको देखो तो ये रेजिन जैसा लगता था, इसलिए इसको alkyd resin भी कह सकते थे. Glyptal is formed between phthalic acid. Now we have phthalic acid plus ethylene glycol. Phthalic acid plus ethylene glycol. Again condensation takes place. Water is removed. और ये दोनों monomers आपस में join कर जाएंगे and we get formation of the polymer called glyptal or Dacron. This is benzene, COOCH2 CH2 oxygen, H is going here again, CO, and this OH is going. This is repeated n times and this is formation of Dacron. एरिलीन में क्योंकि बेंजीन पैरा पोजीशन वाली है इसलिए फाइबर्स बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन डैक्रॉन में क्योंकि बेंजीन ऑर्थो पोजीशन से अटैच्ड हो रखी है इसलिए बहुत अच्छे फाइबर्स नहीं होते. ये रेजिनस सा सबस्टांस एक लंबी सा मास बन जाता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एल्काइड रेजिन. डैक्रॉन आर नॉट वेरी गुड फाइबर्स, दैट्स व्हाई इट इज रेजिनस मटेरियल नेम्ड एज रेजिन, एल्काइड रेजिन. ऑल्दो इट इज नॉट अ रेजिन, still appearance like resin, that's why categorized as alkyd resin. So this is Dacron. दो ही एस्टर्स, दो ही पॉलीएस्टर्स आपके सिलेबस में थे. वन इज टेरिलीन, अनदर इज Dacron. अब बेटा अगला जो पॉलीएस्टर हमारे पास है, क्योंकि ये सारे पॉलीएस्टर जो हम बना रहे हैं, these polyesters are causing pollution. ये जल्दी से खराब नहीं होते, बायोलॉजिकली इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता, इसलिए एक पॉलीएस्टर और है जो कि बायोडिग्रेडेबल है. तो वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर है, ये सिंथेटिक लेकिन बायोडिग्रेडेबल है और इसका नाम है PHBV, that is polyhydroxy butyrate valerate. और इसके आगे बीटा लिखा होता है, बीटा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वैलेरेट. मेरे इसके भी मोनोमर्स आपको पता होने चाहिए. ब्यूटायरेट का मतलब है 4 कार्बन और वैलेरेट का मतलब है 5 कार्बन. वैलेरिक एसिड 5 कार्बन एसिड, ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन एसिड. एस्टर बनाने के लिए अंडरस्टूड है एसिड चाहिए, तो हमने एक एक एसिड लगा दिया. ये पेंटेनोइक हो गया, ये ब्यूटेनोइक. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा. बीटा पे आपको हाइड्रोक्सी लगाना है क्योंकि आपको चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी. दिस इज CH3 CH CH2. यहां पे भी बीटा पे आपको हाइड्रोक्सी लगाना है, H CH2 CH2 CH3. These are the 2 monomers. यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के लिए जो हमारे 2 मोनोमर्स हैं, those are, one is बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, second is beta hydroxy valeric acid. Got it? समझ आया यहां तक? इन दोनों में भी जो लिंकेज बनेगा that is going to be ester. बेटा हम 3-3 कार्बन की चेन बनाएंगे और जो बाकी की चेन है उसको नीचे की तरफ लिख लेंगे सो दैट वी कैन शो द पॉलीमराइजेशन इन अ सिंपल मैनर. देख लो आप कैसे मैंने किया.
मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई, थर्ड पे OH, मिथाइल को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लिया, इथाइल को भी नीचे की तरफ। यहां से एक वाटर निकल जाएगा। अगेन दिस OH is going to leave, here this H is going to leave, and we get this butyrate valerate polymer, CH, C2H5, CH2, CO. Here it is CH2, CH, CH3 and O. N times repeated. This is a polymer which is biodegradable by nature. यानी स्ट्रेंथ है लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है, अच्छा पॉलीमर ऑप्शन है हमारे लिए। और लेटेस्ट पॉलिएस्टर है, लेटेस्ट जो पॉलिएस्टर है दैट इज BHBV, बीटा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वेलरेट। दैट्स ऑल अबाउट योर पॉलिएस्टर्स। वी आर फिनिश्ड विद वन कैटेगरी। जल्दी से आप नोट करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉलीएमाइड्स। कर लिया नोट? Okay, beta. Now it is polyamides. Next topic we are moving on to polyamides. Polyamides का मतलब है now we have amide linkage. लिखो जी, polymers having n times amide linkage. Polyamides का मतलब है polymers having n times amide linkage. एमाइड लिंकेज होता है CONH, तो हम कहेंगे एसिड और अमोनिया यानी NH2। एमीन्स और एसिड के बीच में से अगर वाटर निकल जाए तो जो लिंकेज बनेगा दैट इज कॉल्ड एमाइड। दिस इज एमाइड लिंकेज। और अगर ये एमाइड लिंकेज n टाइम्स रिपीट हो गया दैट इज कॉल्ड पॉलीएमाइड। नाइलॉन 6,6, that is the first example we have. नाइलॉन का मतलब है NY from New York, LON from London. These category of polymers discovered from New York and London, that's why nylons. 6 और 6 का मतलब था 6
6 कार्बन के 2 मोनोमर्स। तो आपको 6 कार्बन एक बार ड्रॉ करने थे, अगेन 6 कार्बन सेकेंड टाइम्स। पहले 6 कार्बन में हम लोग फर्स्ट पे एसिड लगाएंगे और लास्ट पे भी एसिड, CH2 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 CH2, or we can write it as CH2 4 times, COOH COOH plus NH2 CH2 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 NH2। हम इसको और भी लिख सकते थे, और वी कैन राइट इट एज CH2 6 times, NH2 one side, NH2 other side. This is called adipic acid. और इसको बोलेंगे हेक्सामिथाइलिन डायमीन। दूसरा IUPAC नेम लिखते हैं तो 1,6 डाइअमीनो, 1,6 डाई अमीन था, तो आपको आगे हेक्सेन डाइअमीन, हेक्सेन डाई अमीन, और यहां पे बन जाता हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। दोनों में पॉलीमराइजेशन करने के लिए हमें यहां से वाटर निकालना था। वाटर इज रिमूव्ड एंड द पॉलीमर फॉर्म्ड इज CH2 CONH, CH2 6 times, बेटा NH बचेगा, एक H चला जाएगा, इधर CO बचेगा और OH चला जाएगा। नाउ इट इज रिपीटेड इन टाइम्स, तो ये बन गया आपका नाइलॉन 6,6। ये दोनों मोनोमर्स जो हैं 6 कार्बन के हैं, और एमाइड लिंकेज बार बार रिपीट होता रहेगा। पॉलीएमाइड बना, नाम था नाइलॉन 6,6। नाइलॉन के भी फाइबर्स होते हैं, तो ये भी फाइब्रस है लाइक पॉलिएस्टर्स। टूथब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनको बनाने के लिए नायलॉन के फाइबर्स, नायलॉन 6,6 यूज होती है। नायलॉन की रस्सियां बनती हैं, नायलॉन के टेंट शीट बनती है, छाते के जो टॉप कवर होता है वो बनाया जाता है। तो ऑल दीज आर मेड अप ऑफ। पैराशूट क्लोथ जो है वो भी बनाया जा सकता है। जल्दी से नायलॉन 6,6 लिखो और फिर अब अगला हेडिंग है नायलॉन 6,10। Next heading is nylon 6,10. बेटा नायलॉन 6,10 6 कार्बन का एमीन तो बिल्कुल सेम है। नायलॉन 6,10 में 6 कार्बन का एमीन बिल्कुल सेम रहेगा, यानी हेक्सामिथाइलिन डायमीन। लेकिन 10 कार्बन का हमारे पास एसिड होगा, CH2 8 COOH COOH। समझ आ गया? 10 कार्बन एक तरफ और 6 कार्बन एक तरफ। 6 कार्बन का तो आपका सेम अमीन है जो पहले यूज किया हमने, लेकिन 10 कार्बन का एसिड लेंगे। 10 कार्बन के इस एसिड को कहेंगे डेकेन 110 डाइओइक एसिड। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज Sebacic acid।
This is also called Sebacic acid. दोनों की पॉलीमराइजेशन हुई, सेम H2O is removed, water is removed, ज्वाइनिंग हो जाएगी दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स की, 6 कार्बन NHCO, फिर उसके बाद आएंगे 10 कार्बन NH, N टाइम्स रिपीट करते रहेंगे, तो ये बन गया नाइलॉन 610. एसिड 10 कार्बन का होगा नाइलॉन 610 में और 6 कार्बन का अमीन. Next is nylon 6. नाइलॉन 6 यानी 6 कार्बन हमारे पास है, ओनली 6 कार्बन. अब बेटा नाइलॉन 6 में नाउ वी हैव जस्ट 6 कार्बन एंड वी स्टार्ट फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन की ऑक्सीडेशन करें तो अंडरस्टूड है वी गेट साइक्लोहेक्सेनॉन. तो साइक्लोहेक्सेन on oxidation we get cyclohexanol. Cyclohexanol allowed to react with NH2OH. मैम गार्गी ने शायद जाना होगा तो उसको जाना देना. ठीक है. Water is removed. We get formation of oxime, double bond NOH. So this is oxime is formed. This oxime is going to be rearranged by backbone rearrangement. ऑक्साइम्स में जो रीअरेंजमेंट होती है उसे बोलते हैं बैकबैन रीअरेंजमेंट. एक साइड से ये कार्बन चेन टूट जाएगी एंड नाउ वी गेट 7 मेंबर्ड एमाइड. 6 मेंबर कार्बन नाइट्रोजन रिंग में आ जाएगा. तो आपके पास बना देखो 1 2 3 4 5 6 और 7वां मेंबर अब नाइट्रोजन है. इट इज अ 7 मेंबर्ड रिंग. इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम. दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम. ये जो कैप्रोलैक्टम है ये इसकी रीअरेंजमेंट से बना है. देखो जरा N और H मैंने यहां लगा दिया और ये ऑक्सीजन मैंने इस कार्बन पे ले लिया, यानी कुछ भी रिमूव नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया. ठीक है, दिस इज जस्ट रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट. ये एमाइड है, दिस इज एमाइड. This caprolactam is now allowed to react with water in presence of acid. तो आपको मिलेगा